once you get to the maximal dimension of the spleen, we usually measure the length of the spleen in this window here. And you sweep through the spleen completely in sagittal. Images of the spleen. You may see some of those rib shadows in your view, but all you could do is just kind of angle, maybe come a little more anterior or posterior to get around those ribs, and just kind of sweep through as much of the spleen from these different windows as possible until you feel like you've seen the entire spleen. To image the left kidney, we usually have the patient turn up into a right decube so they're facing you, and you're going to kind of here. And the important thing to remember for the kidneys is the upper pole of the kidney is going to be slightly more posterior. The lower pole is going to be more anterior. So you're going to have this kind of oblique transducer position. And when you get the kidney, you probably will also see the spleen in this window as well. And you just want to make sure again that you're sweeping through the kidney in its entirety, lateral to medial. And then what we usually do from here too is we take transverse images of the left kidney. And the easiest way to find a transverse is, again, just look at your probe and think about how you're going to turn 90 degrees to that sagittal image. And you're going to sweep all the way up to the top and down to the lower pole towards the bottom of the left kidney. For these transverse pictures, you may run into the rib spaces, the ribs a little bit. And what I would do is, if you have to, you can use that intercostal space and just sweep through that if you feel like you're not getting a very good image of the upper pole or lower pole of the kidney. And you'll also see if there's any, you'll also see the spleen from this window again too. Okay, another window we can use to get the porta hepatis and the CBD is this intercostal right window again. This is a good window for if you're going to do any pulse wave Dopplers, because usually the main portal vein sets up at about a 60-degree angle. So you get good color fill, and your pulse Doppler is also, you have an accurate pulse Doppler measurement if you need it. So once you find that main portal vein, which you look for the echogenic walls, you elongate it, and from there you know that the hepatic artery and the CBD are going to be right next to it as well. So once you find the portal, you can kind of just keep tweaking the probe until you elongate the CBD completely. And if you're not sure whether or not you're on the CBD or the hepatic artery, just put the color on. Whichever one does not fill with color is the CBD. Important clinical factor that we need to check during ultrasound in order to avoid serious complications of lying placenta or even placenta previa. So as I am looking first on the transverse view of the maternal abdomen, and the structure that I can see here is the bladder. After I rotate my transducer 90 degrees, sagittal view, and on this sagittal view, maternal bladder, I can see vagina. This is echogenic vagina, and I can see the cervix of the uterus. So we are usually measured by doing a transvaginal scan, but here I can see still can see long and closed. And after I'm moving up in sagittal view, trying to identify the position of the placenta, and in this case the placenta is anterior, surface of placenta here, and a placenta looks like a unique structure
at this stage, which is I'm coming back just to show this again. So here you can see identify the cervix of the uterus, and you can see this lower segment of the uterus, and the placenta is very high in this case. So I am moving up in order to understand how far away the placenta, and you can see that it's going up to fundus, so it's not covering the fundus. And the additional thing that I will do, I will rotate my transducer and look for the sides. So the placenta for this lady is practically fully anterior. The additional thing that you can try to see is the attachment of the umbilical cord, insertion of the umbilical cord into placenta. And in this case, it's easy to see because I'm transducer in order to get better views of the umbilical cord. And I can see this is the insertion of the umbilical cord into placenta. Why it's important? Because sometimes there is filamentous umbilical cord insertion with additional complications. In this case, this is central insertion of the umbilical cord into placenta. So this is the way how you can recognize the position of the placenta, and by this very simple way of scanning. है, ठीक है। तो इसमें जो एक्चुअल हेड का निशान है, जो सिस्टम के डिफ़ॉल्ट में सेट है, वो हेड का निशान ये वाला जो है वो पॉइंटर जो है इसका हेड का निशान है। अब हेड का निशान ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इस वजह से है ताकि हम इमेज की ओरिएंटेशन सही कर सकें, इमेज की ओरिएंटेशन देख सकें, ठीक है। हमेशा ये हेड का निशान इमेज की राइट डायरेक्शन को शो करता है, यानी कि इमेज की राइट साइड को शो करता है, और टेल का निशान हमेशा इमेज की लेफ़्ट साइड को शो करता है। जो स्क्रीन पर इमेज बनेगा उसकी राइट साइड को, ये लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो अब हम पेशेंट के ऊपर इसे रख कर देखते हैं कि किस तरीके से जो है स्कैन होता है, तो ये किस तरीके से रोल प्ले करता है। हमने थोड़ी सी जेल यूज़ कर ली। अब प्रोब का मार्कर हमने रखा, तो अब आप देखें कि जेल जो है वो पूरी स्किन की सरफेस के साथ टच हो गई है, ताकि सारी की सारी साउंड बीम्स जो हैं वो पेनिट्रेट कर सकेंगी बॉडी के अंदर। अब इस प्रोब के हेड को या तो मैं पेशेंट के राइट साइड पे रखूँगा स्कैन करते हुए, हेड की तरफ रखूँगा, ऐसा इस वजह से ताकि हमें इमेज नज़र आ सके। अभी मैं आपको इसका स्कैन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इमेज रखा, ठीक है, तो हमें इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इमेज आना शुरू हो गया, पूरे के पूरे साइड्स के ऊपर ये इमेज नज़र आया। यहाँ पर इस स्क्रीन पर आपको ये GE का साइन नज़र आ रहा है, इससे पता चल ये हेड को जाहिर कर रहा है। यहाँ पर इस प्रोब पर एक ये इन्वर्ट का बटन होता है, ठीक है। अगर इस इन्वर्ट के बटन को मैं प्रेस कर दूंगा, ठीक है, ये प्रेस हो गया इन्वर्ट का बटन, तो ये देखें आप, ये साइन जो है GE वाला ये अपोजिट साइड की तरफ चला गया। अब आप इमेज की ओरिएंटेशन देखिएगा, यहीं पे जो है आपको इमेज सेट नज़र आएगा। अभी देखें आप कि लिवर के बॉर्डर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और मैंने इन्वर्ट को यहाँ से चेंज कर दिया, तो अब देखें लिवर के बॉर्डर दूसरी साइड की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है।
तो अभी हमने राइट साइड की तरफ हमेशा ये प्रोब का मार्कर रखना है। तो प्रोब का मार्कर जब राइट साइड की तरफ रखा तो मैंने प्रोब सही डायरेक्शन के अंदर पकड़ी हुई है। पेशेंट की राइट साइड है, राइट साइड की तरफ जो प्रोब का मार्कर है पेशेंट की राइट साइड है, वो मुझे जो मशीन के ऊपर इमेज की राइट साइड की तरफ नजर आ रही है, जो एक्चुअल में मेरे लेफ्ट साइड की तरफ रिप्रेजेंट होगी। आप यूं समझ लें कि पेशेंट जो मशीन है वो आपके बिल्कुल आमने सामने खड़ा हुआ दूसरा शख्स है। तो अगर कोई शख्स आपके बिल्कुल सामने खड़ा हो तो आपका लेफ्ट हैंड की साइड के ऊपर उसका राइट हैंड होता है। तो आप यूं समझिए कि आपके लेफ्ट साइड, जहाँ लेफ्ट हैंड की साइड जिस तरफ है, तो वो प्रोब की कौन सी साइड है? राइट साइड। तो ये राइट साइड की तरफ आपको नजर आ रहा है। अब अगर मैंने उल्टा कर दिया प्रोब, इस प्रोब को उल्टा कर दिया ऐसे, हेड को अब मैं दूसरी डायरेक्शन में लेफ्ट साइड की तरफ रख रहा हूँ, तो अब आप देखें कि ये जो इमेज है यहाँ पे जो राइट साइड की तरफ आना चाहिए था वो सही नहीं आ रहा। यहाँ पर लेबर आना चाहिए था, यहाँ पर लेबर नहीं आ रहा, यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर आ रहे हैं और ये मैं उठा रहा हूँ। और हमेशा याद रखें कि जो आप राइट साइड को, इस सरफेस को जब भी उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, तो हमेशा इमेज इसी साइड से, इमेज के राइट साइड से नहीं आएगा। लेट्स सपोज मैंने ये रखा, यहाँ पे इमेज आया, अब मैंने इस साइड को लेफ्ट कर लिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो राइट साइड देखें, अब आप यहाँ पे गौर करें कि राइट साइड पे जिस साइड पर हमारा हेड था उसका स्किन के साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, यानी कि किसी किस्म की कोई साउंड बीम जो है इस यहाँ से बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रही। तो हम स्किन पे देखें, अगर हम मशीन पे देखें तो हमें इस राइट साइड की तरफ किसी किस्म का कोई इमेज नज़र नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई इमेज नज़र नहीं आ रहा, ये ब्लैंक हो गया क्योंकि यहाँ से साउंड बीम पास नहीं हो रही, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट साइड से उठाऊं, मैंने दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से उठाई है, तो आप देखें लेफ्ट साइड पे, मशीन की लेफ्ट साइड पे इमेज नहीं आया, ठीक है। लेकिन जब बराबर पड़ी है तो दोनों साइड्स पर इमेज है। लेकिन अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, ये प्रोब उल्टी पड़ी हो, ठीक है, तो उल्टी पड़ी हो, अब मैं पेशेंट के राइट साइड से इमेज उठा रहा हूँ। देखें आप गौर करें, मैंने प्रोब कहाँ से लिफ्ट की? पेशेंट के राइट साइड से। और यहाँ पे कहाँ से लिफ्ट हुई? पेशेंट के लेफ्ट साइड से। क्यों? क्योंकि मशीन के अंदर बाय डिफॉल्ट सेव है हमारे पास ये जो टेल एंड है, ये देखिए ये